Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. In last lecture, we have seen these two topics. As I have taken that lecture through mobile, I just revised that point for 5 minutes because the video I have just not recorded for that lecture. Just we will revise that point within a 5 minute and we'll start with the next point. So in last lecture, we have seen like what are the different conventional data visualization methods which are available. So the methods are divided in 4 parts. Like very first is where you can show the data either in table, histogram, scatter plot, some kind of charts. Then second, where you can use a combination of charts and timelines. Third, where you are using some kind of diagram like Venn diagram, data flow diagram, entity relationship diagram. When it is not possible to show the data with a chart and you want to show the relationship of the data, then you have to use some kind of different diagram like diagram and Venn diagram. Apart from that, if your data is more complicated and you cannot use this 3 kind of representation technique, you can use additional methods like parallel coordinators, tree map, cone tree, or semantic network. So these are the 4 different techniques which are available for visualization. So 4 methods are there. So we'll see the one by one. Like first one given is like table, histogram, scatter plot, line chart. So already the different kinds of chart you have prepared and you have also uploaded the presentation on different charts. So we'll have the discussion on that charts also because the same point are coming in a next point के अंदर वो आता है तब we will have a discussion on that. For Venn diagram, DFD diagram. So Venn diagram, we have used this diagram many times either in a discrete mathematics when you want to show the relationship between the two data sets. Like where this is an example I have used to show the like two social media relationship. Example, if we are taking that blue color circle, I am showing it as a Facebook, and a red color circle we are showing as a Twitter. So it indicates that Richa, Shubham, Devyani and John, this is having an account on a Facebook, and Rohan, Geeta, Sagar and John, they are having account on Twitter. So by seeing this diagram, we can see that John is a person who is having account on Facebook as well as on Twitter, and Ankita does not have account on both the social media app. So when you want to show some relationship like intersection, exception or union, so you can use a Venn diagram to show that relationship. Second is a DFD diagram. I already told, like when you want to show the flow of your data in your project, like how the data is passing from one process to another process to third process. So that time you can use a DFD, that is data flow diagram, where a circle is used to indicate the process sequence. Here one example we have used is if a login module is there and we want to show like to the user how the data is passing. So when customer is coming, he has to enter the username and password. So you can understand the customer, if he want to interact with this process, so he has to input the data like username and password. Now this data is given from process 1 to process 2, where process 2 is authentication. For authentication purpose, again this username and password data is passed to the customer data, where it checks its validation. If it is validated, the validation signal data is passed to the next kind of processes. So here P2.1 means this is a module 2 and first process module 2 and second process, like that. Then third one is the ER diagram. So generally if it is a database related project or database related data you want to represent to any of the client, and you want to show like what kind of entities or tables are there or relations are there, what are the different fields available within each entity, what one is a primary key, multi-valued key, which two entities or tables are having a connection with each other.
So here we know that different kind of shapes are used, like square shape, diamond shape, eclipse shape. So every shape is having a different meaning here. Eclipse shape is used when you want to show the fields, square when you want to show the entity, diamond when you want to show the relationship between the two entities. So this is a second visualization tool. Third kind of visualization tool, like when you want to show the data in some kind, when the data is little bit more complicated. Suppose I have given here one example. Yesterday we have seen, like when a parallel coordinators. So in a HPC, when you want to show the different processes which are running in a parallel way, and you want to show the connection between all these processes. So when it is a very complicated, you cannot use a bar chart or Venn diagram or diagram, and the data is little bit complicated running within a parallel coordinator. So that time you have to go with a parallel coordinator one. Then second is a tree map. So it is again an effective method for visualizing a different hierarchy, where a size of each rectangle represent one measure, while color is often used to represent the another measure. So here the one example I have just taken from one of the research paper, where they have used this kind of diagram, where every different subpart is having a different color combination. When you want to show the classical music, they have used this kind of color. For holiday, for like jazz, for comedy. So every subcategory is having a different color. Again, the shapes are used, like in a classical itself, there are a different rectangular shapes are used, which indicate the how many area it have consumed to show that data. Then third one is cone and semantic network. So these point we have already taken in last lecture. Again, we have seen, like when you want to use a different visualization approach for making it more interactive with the user. So the different approaches used is, first one is zoom in and zoom out, where it is used to display the content more clearly and in detail. So in an online lecture, many time a mobile user, if you want to focus on some part when I am teaching, you can use a zoom in and you can focus on that particular topic likewise. So when you want to give the clear and more detailed content idea, so you can use a zoom in and zoom out. Second is overview and detail. When you want to show the multiple views at a time, so that time this technique is used, where multiple views are shown, and any view that you want to show in a detail, you just click that view and you can show that view in a detail. Third is a zoom and pan, where a zoomed visual interface can be pan over the remaining interface area without zooming out the interface. And last one is context or fish eye, where the focused area represents the details about that part of information space. Now, you can use a different steps for interactive visualization. One first method is a selecting, where the interactive selection of data entities or subset or part of whole data or whole data set according to the user interest. तो जो भी डेटा आपको चाहिए, जिसका सिलेक्शन जो आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको सिलेक्ट किया जाता है. सो आइदर यू कैन सिलेक्ट होल डेटा, अगर आपको पूरा के पूरा डेटा यूजर को विजुअल इफेक्ट में रिप्रेजेंट करना है चार्ट के फॉर्म में, यू कैन यूज अ whole data, or you can use a subset or part of a data, or only a particular columns from your data. So first one is selecting a data that you want to show. Then second is linking. It is useful for relating the information among multiple views. अगर आपके पास अलग 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 डेटा है, अलग अलग आपने डेटा जो है उसको व्यू किया और आपको लिंकेज दिखाना है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या लिंकेज है, क्या रिप्रेजेंटेशन है. सो दैट टाइम यू कैन यूज अ लिंकिंग इफेक्ट, where first view you can show what is the relationship between view 1 and view 2. Then third one is you can use is a filtering.
It help user adjust the amount of information for display. It decreases the information quality and focuses on information of interest. इसमें अगर बहुत ह्यूज नंबर ऑफ रोज आर देयर, तो अगर आपको लग रहा है कि 10,000 रोज आर देयर इन योर टेबल एंड यू वांट टू डिस्प्ले द चार्ट ऑफ दैट टेबल, लेकिन सबका सब डेटा नहीं चाहिए, सब रोज नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर रोज को निकाल सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो. सो खाली जो आपको यूजफुल लगने वाला डेटा है सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस किया जाएगा, उसके ऊपर ही आपका विजुअल इफेक्ट्स ऐड किए जाएंगे. So here only the information which is of an interest is they are going to focus on that. And last one is rearranging and remapping. तो जो भी डेटा आपको चाहिए उसको आपको लग रहा है कि फर्स्ट कॉलम जो है 10 कॉलम है आपके टेबल में, तो फर्स्ट कॉलम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थर्ड वाला कॉलम इम्पोर्टेंट है, तो आप रीअरेंज कर सकते हो. थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह लेके जाओ, फर्स्ट को थर्ड की जगह लेके जाओ. सो यू कैन रीअरेंज द डेटा and you can remap it. You can also use a sorting technique. आपको लग रहा है कि अगर कोई टेबल है जिसमें अगर स्टूडेंट के मार्क्स के रिलेटेड टेबल है और आपको लग रहा है कि उसमें एसीटीबी तीनों का अगर डेटा एक ही जगह पे आपने उसको स्टोर किया है बट इट इज नॉट इन अ सीक्वेंस, सो यू कैन यूज अ सॉर्टिंग ऑन क्लास. तो एसी का सब डेटा एक जगह आ जाएगा, टी का एक जगह और बी का एक जगह आ जाएगा. सो दैट मीन्स यू आर रीअरेंजिंग द डेटा एज पर योर इंटरेस्ट टू show that data to the user. Next is what are the different visualization techniques which are available. Okay, अब तक हमने जो पार्ट देखा वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया था. Now the new point I am just starting. So what are the different techniques or methods used for visualization? Very first is अगर आपके पास कुछ डेटा है तो डेटा को कैसे विजुलाइज किया जाता है. सेकेंड, इंफॉर्मेशन विजुलाइजेशन. थर्ड इज कंसेप्ट विजुलाइजेशन. आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट है, कुछ आइडिया है एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट योर कंसेप्ट और आइडिया इन फ्रंट ऑफ someone, so how to make a visual effect for that concept. Fourth is strategic visualization. If you have made a some strategic planning, कुछ प्लान किया है, आपको लग रहा है कि सपोज आफ्टर लाइक अगर हमारे कॉलेज का कुछ डेटा है जिसमें हमने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए हैं कि इतना % स्टूडेंट का अटेंडेंस होना चाहिए या फिर लाइक स्पोर्ट्स में इतना टाइम देना चाहिए, इतना whatever the strategies we have made, the policies we have made, and we want to represent that strategy but not in a textual form, in a visual effect. तो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन को आप कैसे विजुअल इफेक्ट दे सकते हो. द नेक्स्ट इज मेटाफोर विजुअलाइजेशन एंड लास्ट वन इज अ कंपाउंड विजुअलाइजेशन. So in your syllabus only two visualization techniques they have concentrated. First one is data visualization and information visualization. अगर आपके पास data है that can be either in a textual format, means either in a structured format or in a unstructured format. तो अगर आपका data है या फिर आपके पास कोई information है and you want to represent it, so that time they have used like for data visualization these techniques have to be used like table, histogram, scatter plot, line chart, likewise. And for information visualization you can use entity relationship diagram, tree map, parallel coordinators, timeline, flow chart, Venn diagram, DFD diagram, cone tree. So what kind of data you are having, just depend on that you can use a visualization technique. So now from these two also they have filtered out, only they are concentrating on a data visualization. Okay, so we have to concentrate on a types of data visualization. So we have seen that for data visualization these are the main techniques where we have to focus. So for data visualization, so like what are the different techniques or types which are available when you want to represent or visualize the data. So very first you can use a table, means rows and columns में आप data दिखा दो. You can use the Excel, SQL, MS Access, any ऐसा कोई app, ऐसा कोई भी आप application you can use where you can show the data in form of rows and columns. Second, you can show the data in form of histograms, scatter plots. You can use a various charts, timeline,
and different various diagram you can use. Okay, so we'll go one by one. So very first is a table. So you know, like if you have a data which is in a relational manner, that means in a rows and columns. So that means you can divide the data in a columns and you can put the value in a rows. So you can use a simple table structure where you know that first row indicate always a heading of that column, and next row is a information which is representing the value for that column. So you can use a table structure. Second, you can use a histogram structure. In a histogram, it is actually used when you want to show the data in a ranges एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट लाइक कि कौन से रेंज का डेटा कितना ज्यादा है. ओके जैसे अगर हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास जो लाइक स्टूडेंट्स है आप लोगों का, अगर हमको अटेंडेंस जो है पूरे ये सेमेस्टर का जो अटेंडेंस है वो उसको रिप्रेजेंट करना है. सो वी जस्ट डिवाइड इट इन अ रेंजेस लाइक 0 to 20% अटेंडेंस, 20 to 40%, 40 to 60%, 60 to 80% एंड 80 to 100%. सो ये हो गए हमारे लाइक डिफरेंट रेंजेस जो आपके रेंज यहाँ पे आ जाएंगे. ओके और ये हाइट क्या इंडिकेट करेगा? तो मैंने बोला कि जैसे 60 to 80% में अगर मैंने बोला कि 25 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करेगा? ओके 25 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर कमिंग इन दैट रेंज. देन नेक्स्ट जो बताएगा वो बताएगा अरे 40 to 60 ऐसे स्टूडेंट है जो सेकेंड वाले रेंज में आ रहे हैं. सो व्हेन योर डेटा इज इन अ 1D डेटा, ओके 1D डेटा है तो तभी आप इसको यूज कर सकते हो. सपोज हम लोग एक एग्जांपल देते हैं ना एक्सेल. यहाँ पे अगर हमने डाल दिया परसेंटेज में अटेंडेंस लाइक 0 to 20%, 20 to 40%, 40 to 60%, 60 to 80%, and 80 to like 100%. And here we have given like 25 students, 5 students, suppose यहाँ पे हमने डाल दिया 3 students, here 5 students, here we have like given that 34 students are coming in this range, 42 students are coming in this range, and 50 students are coming in this range. And now I want to represent a chart. तो यहाँ पे हमने लेके और यहाँ पे हमने we have just use here insert and column chart. So this is called as the histogram, जहाँ पे आपका खाली 1D डेटा है, जहाँ पे आपको नीचे जो है ये आपको रेंजेस पता चल रही है, एंड दिस वर्टिकल लाइन इंडिकेट लाइक हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर. जैसे अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ कर्सर लेके, इट इज शोइंग दैट इन दिस range the 50 students are coming, in this range the 42 students are coming likewise. Or you can use such kind of chart also जहाँ पे नीचे रेंज दिखाई दे रही है और ऊपर क्या दिखाई दे रही है, उसके वैल्यूज दिखाई दे रही है. So here you can use a bar chart when your data is in a 1D, and 1D मतलब जिसमें खाली कोई comparison नहीं दिखाना है. Okay, different ranges are there and you want to show कि हर range में कितने लोग हैं या कितनी सारे एंटिटीज है जो उस रेंज में आ रहे हैं, एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट कि कौन सा वाला रेंज है जहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है और कौन सा रेंज है जहाँ पे सबसे लेस वैल्यू जो है वो इंडिकेट हो रहा है. दैट टाइम यू कैन यूज अ हिस्टोग्राम. जनरली इमेज प्रोसेसिंग में हिस्टोग्राम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. Second is a scatter plot. Scatter plot is only a x and y coordinated, means it is used when you want to represent a 2D kind of data. And when you have a multiple data points and need to examine the correlation between x and y variable. Okay, अगर यही चीज अभी हम बोलते हैं कि इसके बजाय, okay, and I am using here a scatter plot. So it is just showing a different like कि इसमें अलग अलग पॉइंट्स जो है ये स्कैटर प्लॉट में डिवाइड किया जाता है, बट इट इज एक्चुअली यूज व्हेन यू हैव अ मल्टीपल डेटा. जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन दिखाया है. व्हेन यू हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर अवेलेबल ऑन एक्स एंड वाई वैल्यू,
जिसके लिए आप बार चार्ट या फिर कोई दूसरा चार्ट यूज नहीं कर सकते हो. So that time you can go with a scattered plot. That means when you have a multiple data points and need to examine the correlation between x and y variable. Consequently, variables should depend on each other or influence each other in some way. For example, supply is usually related to demand. तो जैसे यहाँ पे अगर आप डाल दो डिमांड एंड सप्लाई, ओके, तो जैसे यहाँ पे आप उसका रिलेशनशिप बता सकते हो कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होता है सप्लाई वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो इट गोज इन अ लीनियर वे. जो डेटा पॉइंट है वो लीनियर वे में इंक्रीज होता है. Then next is a timeline chart. A timeline chart is an effective way to visualize the process using chronological order. Chronological मतलब timely order में. जब आपको बताना है कि जैसे अगर मैंने बोला कि SNJB का जो growth है वो आप दिखाओ. So what you will do, like कौन सी year में SNJB open हुआ, like 1928 where the SNJB have just started their organization, संस्था start हुआ. Then like फर्स्ट स्कूल कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ, देन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से ईयर में आया, डिप्लोमा कब आया, फार्मेसी कब आया. सो हर ईयर के लिए, एवरी ईयर स्पैन के लिए आप क्या करते हो, कुछ चीज रिप्रेजेंट करते हो. दैट इज कॉल्ड एज अ टाइमलाइन चार्ट. It is having a two type, linear timeline chart and comparative timeline chart. In a linear, it shows a picture of events as they occurred in a certain period of time, and comparative where you want to show two or more subject area which occurred at the same time. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया SNJB का, सिर्फ वन एक एंटिटी लिया और वो उसका लीनियरली हर ईयर वाइज या हर 5 इयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए वो हमने बताया. अब मुझे कंपेयर करना है सपोज SNJB संस्था को किसी दूसरे संस्था के साथ, एनी लाइक सपोज MIT जो है उसके साथ, तो दोनों का टाइमलाइन चार्ट हम वहां पे दोनों का बताएंगे और कंपेयर करेंगे कि जैसे इस ईयर में इनके पास 1000 एम्प्लॉयज थे, तो सेम ईयर में दूसरे कंपनी या फिर दूसरे संस्था के पास कितने एम्प्लॉयज थे, कितने स्टूडेंट्स थे. सो यू कैन मेक अ timely comparison chart. So this is a one example, like where you can start with a year and go on a year and you can add a different like events कि this year में ये event हुआ, then second next year में क्या happen हुआ. So you can show it in a timeline. And next you can show a comparative. जैसे timeline हम लोगों ने same लिया है यहाँ पे and we have used like the comparison of two things. तो दोनों का कंपैरिजन में हम दिखा सकते हैं कि 1995 में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हुआ था और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या चीजें हुई थी. सो यू कैन मेक अ कंपैरेटिव टाइमलाइन chart when you want to show the comparison depend on the time with the two or more than two entities. After that you can use the various types of charts also. So already you have seen like you have prepared like the uses of charts and when to use that chart. Like first is a line chart, second is a bar chart, pie chart, area chart, flow chart and bubble chart. Apart from this you can also find some other types of chart also, but these are the main charts which is mostly used or you have seen that charts most of the time. जैसे line chart when you want to show like जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट, तो जैन से लेके जून तक हर एक का कितना सेल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. आई वांट टू शो द टाइमलाइन लाइन चार्ट ऑफ दिस 3 आइटम्स. तो यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे उसका सेल जो है वो डिक्रीज हो गया है. लैपटॉप जो है कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज, इट इज शोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन. एंड टैबलेट्स, तो अगर आप देखोगे जैसे टैबलेट्स दे हैव शोन दैट वेरी इंक्रीजिंग. हर मंथ में जो सेल था टैबलेट का ये कंटिन्यूसली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो दिस पॉइंट इंडिकेट फॉर दिस मंथ. जैसे जैन मंथ में टैबलेट कितने बेचे गए थे, सपोज किसी स्टोर के 10, लैपटॉप 30 and desktop जो थे suppose 80, but when I am showing it in a April, तो April में the desktop is at almost 20 and tablets it at 35 and laptop at 50. तो आप दिखा इसमें हर एक मंथ के लिए हमने तीनों के लिए कुछ पॉइंट्स दिखाया है
जिससे वो लाइन चार्ट को यूज कर सकते हो. सेम थिंग यू कैन रिप्रेजेंट लाइक डिफरेंट बाय यूजिंग अ बार चार्ट. जैसे यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स जो है एसईटी बी का जो रिजल्ट है वो बार चार्ट में दिखाया है कि जैसे डिस्टिंक्शन में कितने स्टूडेंट्स थे हर क्लास के. तो एसी में लाइक 25 स्टूडेंट्स हैविंग अ डिस्टिंक्शन. In T, they are having 35 students, and B, there are 40 students having a distinction. So you can have a comparison of AC, T, and B depend on a different categories. So that time you can use a bar chart. When you want to show the like ग्राफ ऑफ ओनली वन एंटिटी, जैसे यहाँ पे हमने 3 एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया, कंपैरिजन किया, मुझे सिर्फ बी का जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पे हमने बता दिया कि सिर्फ बी क्लास में कितने 40% डिस्टिंक्शन थे, 30% फर्स्ट क्लास, 15% हायर क्लास, सेकेंड क्लास 8% पास क्लास एंड 7% फेल. तो खाली वन क्लास का पूरा डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है वन एंटिटी का अलग अलग एरिया में. सो यू कैन यूज अ पाई चार्ट व्हेन यू वांट टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज with a different category. So you can use a bar chart. That time you can use a area chart which shows a like two coordinator values and how it is going up and down. You can use a flow chart. Here I have just taken the flow chart of feedback system that our college is using. तो जैसे यहाँ पे हमने बता दिया कि स्टार्ट एंड सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है. अगर कोई फीडबैक इंचार्ज, हमने नया कोई स्टाफ है उसको फीडबैक इंचार्ज बता दिया. सो वी हैव टू गिव हिम लाइक व्हाट इज द फ्लो ऑफ ड्यूटीज ही हैव टू मेक. Like very first he have to prepare a Google form as per the format and policies decided. So he should have feedback form format available and what kind of policies the college is having. ये दोनों का information अगर उसके पास रहेगा तो ही वो Google form बना सकता है. Next, distribute that Google form टू द स्टूडेंट वाया ईमेल एंड व्हाट्सएप. तो उसको पता चल गया कि एक बार गूगल फॉर्म बनाया तो ये गूगल फॉर्म जो है स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आइदर ऑन ईमेल और आइदर ऑन व्हाट्सएप, बट not to all student, it is to the particular student which is satisfying certain criteria decided by college or department. Then whatever the feedback given by the students, just analyze that feedback, verify and submit it to the higher authorities, either to the HOD or principal. Then HOD will add the remark and communicate it to the respective course in charge one to one basis, जिसमें वो बताते हैं कि क्या है क्या नहीं. और अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का फीडबैक किसी जो डिसाइडेड थ्रेशोल्ड है, सपोज डिपार्टमेंट का कि 60% 70%, अगर उसके नीचे आता है तो उसके ऊपर लाइक कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए वो सजेशन प्रोवाइड करता है. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर एनी strategy or anything. So you can represent that thing in a flow chart. Then next is a bubble chart. So these are the different charts which are available. ये links मैंने यहाँ पे provide किए. You can also go through this link. इसमें और इसके अलावा भी बहुत सारे charts और कब उस chart को use करना है, कब कैसे represent करना है. So every information they have just added here. The next point is visualizing a big data. ओके अब तक हम लोगों ने जो देखा, इट इज जस्ट व्हाट आर द विजुअलाइजेशन टेक्निक्स विच आर अवेलेबल, उसके अंदर कितने टाइप्स है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ABCD लाइकवाइज. लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम जिस के ऊपर काम कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, दैट इज अ बिग डेटा. अगर हमारा डेटा बिग डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो वो टाइम पे आप बिग डेटा को विजुअलाइज कैसे करोगे, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू हैव टू यूज. ओके वो टूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हम खाली अभी देखेंगे लाइक हाउ टू विजुअलाइज द बिग डेटा. सो big data visualization involves the presentation of data of almost any type in a graphical format that makes it easy to understand and interpret, but it goes far beyond typical corporate graphs, histograms, pie chart, and to more complex representation like heap maps and fever charts, enabling decision makers to explore data set to identify correlations और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न. तो उन्होंने बोला है कि अब तक जो आप लोगों ने देखा कि सिंपल अलग अलग चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, हिस्टोग्राम्स हो गए, बट व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट अ बिग डेटा तो सिंपल ये इतने से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसके अलावा आपको इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा.
तो इसके बियॉन्ड लाइक हिप मैप हो गए, फीवर चार्ट्स हो गए, ये कुछ अलग चार्ट्स या मैप्स है जो आपको यूज करना पड़ सकता है, where you want to actually show the relation, correlation between the two things, or you want to represent some hidden patterns, unexpected hidden information, hidden patterns को जब आपको सामने लेके आना है कुछ डिसीजन लेने के लिए जो आपको सिंपल चार्ट्स में नहीं दिख सकते हैं. So that kind of information you have to represent when your data is a big data. A defining feature of big data visualization is a scale. Today's enterprises collect and store vast amount of data that would take years for a human to read, let alone understand. मतलब उन्होंने बोला है कि आज के टाइम में जो इतने इंटरप्राइजेस है, बड़े बड़े कंपनीज है या फिर कुछ एप्स है, वो इतना डेटा कलेक्ट करते हैं कि अगर एक ह्यूमन सिर्फ उसको रीड भी करना चाहे, वो जो डेटा उसको सिर्फ रीड करके समझना चाहे, तो भी उसको बहुत सारे साल लग जाएंगे. इट वुड टेक आइदर 10 or 20 years also to just read and understand that huge amount of collection of data. But researchers have determined that the human retina can transmit data to a brain at a rate of about 10 megabits per second. Big data visualization relies on powerful computer system to inject raw corporate data and process it to generate graphical representation that allow human to take in and understand vast amount of data in a seconds. तो बिग डेटा विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है वो इतना ज्यादा पावरफुल बना है कि जो डेटा को एक्चुअली समझने के लिए किसी ह्यूमन को ईयर्स लगते थे, वो कुछ ही सेकेंड में आप जस्ट उसको रिप्रेजेंटेशन के ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको कंप्यूटर देगा कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट डेटा ओनली विद इन सेकेंड्स. Okay, so this is actually how the visualization of big data works. In the next lecture, we will see what are the different tools used in data visualization. That tools can be either licensed or it can be open source data visualization tool. So, like any question from your side, students? For today's lecture, do you have any question? Okay. So no questions. So I'm just ending the meeting here.